I think right now I am audible to you. Am I audible to you or not? Okay. So, today's topic of discussion is what is the difference between honesty and integrity? Why our civil servants should have honesty and integrity? In which way honesty and integrity contribute for good governance in a country or in a state? In addition to that, I would be also discussing another question in today's YouTube session, that is, honesty is a necessary but not the sufficient factor for good governance, justify. These are the questions that I plan to discuss in today's class. But before going to explain you the answer of the questions that I gave you, first I would be explaining you what is honesty and how honesty is different from integrity, that I would be discussing right now. So, how honesty is different from integrity, that I will be discussing right now. But before discussing and giving you the definition of honesty and integrity, first of all, I would like to cite an example from life. पिलामाने honesty और integrity उपरे clear cut distinction करिवा पूर्वरु एवं definition दबा पूर्वरु first मो example माध्यमरे I want to tell you what honesty is and what integrity is. First, take an example. You see, suppose there are 3 OAS officers. Suppose there are 3 OAS officers. OAS officers. OAS officer 1, OAS officer 2, OAS officer 3. These are the 3 OAS officers posted in Balangir districts. These 3 officers are posted in Balangir. Balangir, somebody is posted as Tahsildar, you can say. Somebody is posted as BDO somewhere in Balangir, and somebody is working as Deputy Collector in Balangir Collectorate. So, there are 3 OAS officers posted in Balangir district. Right now, Government of Odisha is organizing a training program for all OAS officers posted in different parts of our state. Government of Odisha कौन करछि गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूछि OAS ऑफिसर मानक पाई जो माने राज्यर विभिन्न जगह काम करछन्ति. Right now these 3 officers came to that government sponsored program. That program is organized here in Bhubaneswar. Suppose Bhubaneswar रे program होछि 3 जण OAS officer आसिले. But before going further, I want to tell you these 3 officers are duty bound. They sincerely reach in office at 10 o'clock and they don't take bribe from anybody in the office, whoever comes to their office for any work. In addition to that, they don't also expect to be treated specially by the public. पिला माने जनरली जो माने OAS ऑफिसर थांती IAS ऑफिसर थांती बेले बेले तांको मन भीतर को फीलिंग आसे वी आर स्पेशल, सो वी नीड स्पेशल ट्रीटमेंट. किंतु ये जो 3 जण ऑफिसर वर्तमान बलांगीर रु भुवनेश्वर आसुचंती 3 जण जांक एमती केबे फील करंतिनी दैट दे शुड बी ट्रीटेड स्पेशली बाय द पब्लिक एंड दे डोंट टेक ब्राइब. दे रीच इन ऑफिस ऑन टाइम. All the 3 officers are honest. पिला माने बुझी पारछो व्हाट इज ऑनेस्टी
I am telling you, honesty is a quality of being fair, being truthful, and being obedient to the rule. You can write it down. Honesty means it's a quality of being fair, honest, quality of being fair, obedient, and truthful to the rule or regulation or law of the department, of the organization. That is honesty. So all the three officers are honest officers. बर्तमान ये तीन जन ऑफिसर आसिले भुवनेश्वर को बलांगीर रु ता संगे ओडिशार अलगा जगारू अन्य ऑफिस ओएस ऑफिसर माने आसीचंती सबु ओएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर रे गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम करूछि। तीन जन आधे अच्छी कौन जे जो माने विभिन्न जगारू आसुचंती गवर्नमेंट सपोज गोटे प्रोविजन कला से मानको दिया हब ट्रैवलिंग अलाउंसेस सपोज 10,000 टंका दिया हब प्रत्येक ऑफिसर जो माने भुवनेश्वर आसीचंती ट्रेनिंग प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करिया पई all the officers should be given a travelling allowance of 10,000 rupees. In addition to that, obviously accommodation is provided by the government in different hotels in Bhubaneswar. बर्तमान तंकर प्रोग्राम सरला परे कौन हेची तीन जन ऑफिसर बर्तमान तंकु 10,000 टंका लेखा दिया हबो ट्रैवलिंग अलाउंसेस कही दउची। ऑफिसर 1 ये कौन कले ये गोटे टैक्सी हायर करिकी यही काम रे भुवनेश्वर आसिले। ऑफिसर 2 सेकेंड ऑफिसर कौन कले ना तांकर सांग जने बलांगीर जाइथला तांकर सांग जने बलांगीर जाइथला सांग फेरुथिला बलांगीर रो भुवनेश्वर सेकेंड ओएस ऑफिसर जनक सांगर कार रे बलांगीर रो भुवनेश्वर आसिले किछि पैसा से खर्च करी नाहंती आसीबा पाई। थर्ड ओएस ऑफिसर जनक भुवनेश्वर रे गोटे कोनसी जगह रे गोटे मीटिंग होउथला ता पूर्व दिन से मीटिंग की से चीफ गेस्ट बा चीफ स्पीकर हिसाब रे आसीथिले तेनो से ऑर्गेनाइजेशन तांको भुवनेश्वर को आसीबार जहा पैसा खर्च होइथला से ऑर्गेनाइजेशन तांको देछि। तेणु तीन जन ओएस ऑफिसर जड़े हेले बीडीओ जड़े हेले तहसीलदार जड़े हेले डेप्यूटी कलेक्टर बलांगीर रे पोस्टिंग होइचंती भुवनेश्वर रे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करिया पई आसीचंती तीन जन जाक एमती तीनटा डिफरेंट वे रे आसिले। आई एम टेलिंग यू ऑल द 3 ऑफिसर्स डोंट टेक ब्राइब दे डू देयर ड्यूटी प्रॉपर्ली दे डोंट इवन थिंक to be treated specially by the public. So in this way I am telling you all the 3 officers are honest, they are having honesty. किंतु 1 नंबर ऑफिसर जी टैक्सी बुकिंग करके आसिले एठी प्रोग्राम सरीगला गवर्नमेंट तरफरु तांको 10,000 टंका दिया गला से 10,000 टंका नेले ट्रैवलिंग अलाउंस हिसाब रे नेले। सेकेंड ऑफिसर सी तांको सांगर व्हीकल ले आसीथिले एवं सांग भुवनेश्वर रे रहे से बलांगीर जाइथला ये ता गाड़ी रे आसीथिले एवं सांग किछि पैसा आंक पाखरु नेई नाही आंको आनिया पई बलांगीर रो भुवनेश्वर तेनो तांकर किछि पैसा खर्च हेई नाही। किंतु जतले सरीगला ट्रेनिंग प्रोग्राम सेकेंड ओएस ऑफिसर को गवर्नमेंट तरफरु 10,000 टंका दिया गला ट्रैवलिंग अलाउंस हिसाब रे से ताको एक्सेप्ट कले। थर्ड ऑफिसर ओएस ऑफिसर से कौन करथिले ना भुवनेश्वर रे कोनसी एक ऑर्गेनाइजेशन तांको चीफ गेस्ट करिकी बा चीफ स्पीकर करिकी पूर्व दिन डाकिथिला संध्या रे एवं से ऑर्गेनाइजेशन तांको बलांगीर रो भुवनेश्वर आनिया पई पैसा देइथिला तांकर किछि पैसा खर्च होई नथला। बर्तमान एठी ट्रेनिंग प्रोग्राम सरीगला परे गवर्नमेंट तरफरु जी कैशियर थिले जे क्लरिकल स्टाफ थिले सी तांको 10,000 टंका देले। सेकेंड ऑफिसर को 10,000 दिया हला थर्ड ऑफिसर को 10,000 दिया हला फर्स्ट ऑफिसर को 10,000 दिया हला। फर्स्ट ऑफिसर ऑनेस्ट
सेकेंड ऑफिसर ऑनेस्ट, थर्ड ऑफिसर ऑनेस्ट, किंतु देखंतु सेकेंड ऑफिसर सांगर गाड़ी रे आसीथिले किंतु ट्रेनिंग प्रोग्राम रे गवर्नमेंट तरफ टीए बाबद रे 10,000 टंका नेले, किंतु थर्ड ऑफिसर चीफ स्पीकर है कि पूर्व दिन राति रे भुवनेश्वर को आसीथिले, ट्रेनिंग प्रोग्राम सरीगला, गवर्नमेंट तरफ जी कैशियर थिले तांको 10,000 टंका देले, से आउटराइटली मना करदेले, कहले मु नेबी नाही। कैशियर गवर्नमेंट तरफ कहले एटा तो आपण डिजर्व करूचंती, 10,000 टंका आपणकर प्राप्य, व्हाई यू वुड नॉट टेक इट, यू टेक इट। से किंतु कहले नो, आई हैव नॉट स्पेंट ए सिंगल पैसा फ्रॉम माय पॉकेट, व्हाई आई वुड टेक 10,000 रुपीज फ्रॉम गवर्नमेंट। से आउटराइटली मना करदेले। तेणु मु कहबी 3 नंबर ऑफिसर is an officer having honesty as well as integrity. Note it down. Officer number 3, OAS officer number 3, posted in Balangir, somewhere in Balangir, is having honesty as well as integrity. Officer number 2 is having honesty but lacking integrity. लिखि दियो, ऑफिसर नंबर 2 इज हैविंग ऑनेस्टी बट लैकिंग इंटीग्रिटी। 2 नंबर ऑफिसर जनकर ऑनेस्टी अच्छी किंतु इंटीग्रिटी नाही। ऑफिसर नंबर 1 आमे कहिबा ही इज हैविंग ऑनेस्टी बट वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट हिज सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। तांकर इंटीग्रिटी टेस्ट एठी एग्जाम्पल हो पारु नाही, कारण सीए 10,000 टंका खर्च करथिले एवं तांको सरकार को तरफ 10,000 टंका दिया होची। सो इन दिस वे द एग्जाम्पल दैट आई साइटेड, दिस एग्जाम्पल मेक्स ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सो व्हाट इज ऑनेस्टी एंड व्हाट इज इंटीग्रिटी? आई एम टेलिंग यू अगेन। You see, honesty, write it down. Honesty is a quality of, honesty is the quality of being obedient, fair and truthful in a matter of performing your duty. I am repeating it again. Honesty is the quality of being fair, truthful, and obedient to the rule while you are performing your duty. तेनो जहाँ रूल अच्छी, रूल को मानिकी ट्रुथफुल रहीकि काम करवाटा को कहुची ऑनेस्टी। तेनो ऑनेस्टी रे प्रायोरिटी दिया होची रूल टाको, रेगुलेशन टाको, लेटर ऑफ लॉ टाको। पिला माने बुझी पारुच, किंतु इंटीग्रिटी होची, इंटीग्रिटी इज ए हायर इज ऑनेस्टी ऑफ हायर डिग्री। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी ऑफ हायर डिग्री एंड इंटीग्रिटी इज द ऑनेस्टी अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। पिला माने क्लियरली बुझी पारुच? टिके देखि दउची तमर किछि मेसेज देइछ कि? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? समस्ते पिला माने बुझी गल? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी भीतर तफात समस्ते बुझी गल? आउ गोटे एग्जांपल दउची, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी रो एग्जांपल दउची। तमे जानिछ मौर्यन पीरियड रे चंद्रगुप्त मौर्य 2 तांको पीरियड रे तांकर जने मिनिस्टर थिले, तांकर ना होची कौटिल्य बा चाणक्य। चाणक्य को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। प्राचीन भारत रे जो प्रशासन चली थिला तार जदि जनक किए हुंती भारत वर्ष रे
he is none other than Chanakya or Kautilya. So he is the father of traditional Indian administration, ancient Indian administration. चाणक्य कथा कहूँ चाणक्य बहुत ऑनेस्ट थिले चाणक्य बहुत ऑनेस्ट थिले किंतु तांको इंटीग्रिटी रो एग्जांपल मो दउची चाणक्य समय जड़े चाइनीज पिलग्रिम तांको ना होची फाइहान आसी थिले दिने फाइहान को इनवाइट कले तांको घर को चाणक्य एवं चाणक्य जिते इनवाइट कले पाखापाखि संध्या 7टा बेलू को फाइहान आसिकी पहुँचिले चाणक्य घरे जिते घरे पहुँचिले सेतबेले कौन कले चाणक्य से समय इलेक्ट्रिसिटी नथिला पेट्रोमैक्स लाइट नथिला आजिकार समय आ से समय भितर बहुत डिफरेन्स थिला तेणु से समय जो माने राजकार्य लिप्त थिले सेमानंकु राज प्रशासन तरफ गोटे लंठन टाइप गोटे आलुआ दिया होता वर्तमान चाणक्य घरे आसिक पहुँचले फाइहान जहाँ से डाकी वर्तमान चाणक्य कौन कले ना गोटे लंठन जोटा से जलुला पाखे से लिभे देले लिभे देकी आउ गोटे लंठन को जलैले तापर तांकर कथबार्ता है कथबार्ता सरला परे फाइहान पचारले जे यू आर ए वेरी गुड पर्सन वाइज पर्सन बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग स्ट्रेंज इन योर बिहेवियर दैट इज as soon as I reached at your home I observed that you started dousing of one light लिभे दबा आपण गोटे लाइट के लिभे देले and you started lighting of another light what is the reason चाणक्य सेठू फाइहान को बुझाऊँच कहते जे आपण आसवा पूर्व मु राजकार्य करुली जेहेतु राज्यर कार्य करुली राज्य तरफ जो लंठन मते दिया बा जो लाइट मते दिया आई वाज यूजिंग दैट बट यू आर माय प्राइवेट गेस्ट तेणु जेहेतु आपण मोर प्राइवेट गेस्ट मोर व्यक्तिगत संपर्क को लेकिन आपण संगे बंधुता होती व्हाई आई विल यूटिलाइज the light provided by my state for the purpose of entertaining you. This is the best example of integrity. Best example, the best of the best example of integrity is this one. Our अर्थ होची honesty across time, situation is called integrity. जदि आपण को केही देखु नाहंती सेतबळे आपण कोन करूचंती whether you are true to yourself or not देखंतु honesty कहले true to the world honesty means true to the world सारा पृथ्वी देखिबो आपण आईन कानून माने कि चलचती that is honesty integrity means true to oneself having truthfulness with you displaying your truthfulness to yourself is called integrity. That's the reason I told you that honesty is a higher order, or integrity is a higher order honesty. Honesty across time and situation is called integrity. पिला माने समस्ते honesty और integrity भितरे तफात बुझीदेल ना नहीं? All of you are clear? एठी मो ए स्लाइड रे कर दी से जिनस यू सी दिस इज ए लैडर एटा गोटे सीढ़ी देख सीढ़ी एठी ए सीढ़ी रो तले मु रखिली at the base of the ladder I placed honesty. Honesty is no doubt a good quality. All officers are expected to be honest. All our civil servants, whether they are in Odisha civil service or they are in Indian civil service, they are expected to become honest. Honest means becoming truthful to the rules and regulation of the organization where you are serving. All our administrators are expected to be honest.
तेणु ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी बट कंपेयर टू ऑनेस्टी यू सी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग एट ए हायर प्लेन compared to honesty integrity is standing at a higher plane. That's the reason I told you integrity is honesty of higher degree. Integrity means honesty across time and situation. प्रत्येक सिचुएशन रे ऑनेस्ट रहिबा केमिति देख मु कहूची मोटर व्हीकल एक्ट आसीची मोटर व्हीकल एक्ट रे जदि ट्रैफिक रूल इफ यू वायोलेट द ट्रैफिक रूल यू वुड बी पेनालाइज्ड हेवीली बहुत पैसा फाइन दबा पई पड़िबो मोटर व्हीकल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट रे आपण जेते बळे जाउचंती ट्रैफिक सिग्नल को देखुचंती रेड लाइट अछि यू स्टॉप्ड योर व्हीकल आफ्टर ऑब्जर्विंग द रेड लाइट मीन्स यू आर obeying the law of the land, you are obeying the rules of the traffic. So obeying the rules of traffic is also one dimension of honesty. आपण सबुदिन ट्रैफिक पाखरे थिया हुंती रेड लाइट की देखिकी ग्रीन लाइट की देखिले यू स्टार्ट ड्राइविंग योर व्हीकल that means you are obeying the law of the land, you are obeying the traffic rules, you are honest also. किंतु दिने सकाळ 5टा बेले you were driving your vehicle, you were driving your scooty or four-wheeler. You observe that there is a red light at traffic post, but no policeman is standing there. सकाळ 5टा कौनसी लोक नाहांती पुलिस नाही चिंता कल जे केही तो नाहांती रेड लाइट जलुथाओ पळेले असुविधा कौन अछि रेड लाइट जलुथाओ केही तो देखु नांती पळेई जीवी सेठी कौन होची across time across situation आपण ऑनेस्ट रही पारु नाहांती across time across situation आपण ऑनेस्ट रही पारु नाहांती ता माने जदि पुलिस अछि मु आईन मानिबी जदि पुलिस नाही मु आईन न मानिले चलिबो means you lack integrity all of you got it all of you got it हाँ मैं देखुची तुम जहाँ मेसेज दौच कहीं तो मेसेज के किसी कहार डाउट थिला भलिया मेसेज मो पाखरे पहुँची पारुनी ओके सो आई एम प्रोसीडिंग बिकॉज आई कुड नॉट सेंस यू आर हैविंग एनी डाउट सो लेट मी प्रोसीड and I think the simplest way by citing example from day to day life I am explaining you the things you might be getting it very well समस्ते क्लियरली बुझी पारुछ देख ये जिनसटा मुझे बुझे देछि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी भितर डिफरेंशिएशन कर देछि ऑनेस्टी मीन्स बिकमिंग ऑनेस्ट टू द वर्ल्ड दैट इज ऑनेस्टी अन्य लोक माने देखिबे यू आर नॉट टेकिंग ब्राइब you are not misusing your power you are not demanding special treatment in public sphere means you are honest but honesty to yourself is called integrity honesty to yourself केही मते देखु नाहांती मु ठीक रही कि नाही तापर आउ गोटे मीनिंग ऑनेस्टी रा अछि इंटीग्रिटी आउ गोटे मीनिंग अछि मिस्टेकनली पसिगला पटरे honesty means obeying the law integrity कथा कहूची integrity means integration in the thought speech and action of a person पिला माने integrity तीनिटा जिनस को बुझाउची integration coordination between the thought action and speech of the person जहा मनीष कहूची जहा ऑफिसर टे कहउचंती से करूचंती एवं जहा से करूचंती से विषय चिंता करचंती जणे तुमको ब्राइब देला लाख टंका नेलो नाही काहे कि नेलो नाही कहला नेले आई मे बी अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल एई कथा चिंता करी कि नेलनी तमे ऑनेस्ट अछ किसी असुविधा नाही नै ना माने ऑनेस्ट अछ किंतु मन भीतर को चिंता आसूची जदि पॉसिबिलिटी न था अरेस्ट हो कि जेल जीवार विजिलेंस द्वारा धरा हबार
ताहले नहीं जाई थांती लक्षे टंका बुझी होची ता माने थॉट टा अलगा एक्शन अलगा थॉट और एक्शन भितर गैप रहिला सो देयर यू कैन फाइंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑन योर पार्ट कारण निजुको निजे ऑनेस्ट हे पारना पृथ्वी देखुची एंटायर स्टेट इज ऑब्जर्विंग द फैक्ट दैट यू आर नॉट टेकिंग ब्राइब ऑल ऑफ यू आर क्लियर सेटा मु बुझाइची फर्स्ट पॉइंट रे ऑनेस्ट मीन्स honesty means to become honest to the world but integrity means honest to oneself or yourself honest to yourself or oneself clear second honesty means following the rule but integrity means following the spirit of the rule पिला माने रूल टाको फॉलो कले ऑनेस्टी हबो किंतु रूल पछरे गोटे स्पिरिट अछि काहे के आईन ता तयारी हेछि काहे के आईन ता तयारी हेछि से स्पिरिट टाको जदि चिंता कल फॉर एग्जांपल ब्राइब मु नेबी नाही बोले कि चिंता कल नेलो नाही सो यू फॉलोड द रूल सो यू आर एन ऑनेस्ट ऑफिसर सपोज यू आर OAS ऑफिसर यू आर IAS ऑफिसर somebody gave you bribe but you followed the rule of not taking bribe so you are an honest officer but following the spirit of the bribe spirit of the but organization or rule spirit of the rule or law कौन जे मु ब्राइब एथि पाई नेबी नाही कारण ब्राइब नेले ब्लैक मनी मो पाखरे हबो ब्लैक मनी मो पाखरे हेले जो लोक माने आम राज्य रे बा आम देश रे गरीब अछंती तांकर परचेजिंग पावर कमी जीवो लोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ट्रस्ट कमी जीवो ए कथा चिंता कल बा तमे पुणी कहल टेकिंग ब्राइब इज इमोराल एक्टिविटी ये सबू कथा पर कथा कार्य एवं कौन होची थॉट तीनिटा भितर कोऑर्डिनेशन आसीगला दैट मीन्स यू आर हैविंग इंटीग्रिटी दैट्स आई टोल्ड यू फॉलोइंग द रूल इज कॉल्ड ऑनेस्टी फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द रूल टा भीतर जिनस जोटा देखा जाएनी जोटा को फील करी हुए जोटा को चिंता करी हुए जोटा को रियलाइज करी हुए दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ द लॉ स्पिरिट ऑफ द रूल दैट इज इंटीग्रिटी थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑनेस्टी मीन्स इंटीग्रेशन विथ द लेटर ऑफ लॉ जहाँ आईन लिखा है ताकू तमें रेस्पेक्ट करुच ता संगे अटैच्ड हो जाउछ दैट इज ऑनेस्टी सो फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ इज कॉल्ड ऑनेस्टी ऑन द अदर हैंड फॉलोइंग the or integrating with the letter and spirit of the law आईन टाको मानिल आईन पछरे जहाँ अच्छी जोटा को देखी होनी रियलाइज करी होची से कथा रियलाइज करके फील करके कौनसी सिचुएशन रे भी केही न देखुथिले भी ब्राइब नेबी नाही कारण मु निज पाखरे निजको सत करके रखिबी पृथ्वी रे केही न देखंतु मु तो निजको देखुची मु तो मोर निजर कार्यकलाप जानी पारुची मु तो मोर चिंता को फील करी पारुची मो मन भितरे पैसा नबार ब्राइब नबार चिंताधारा आसीबा अनुचित द feeling of taking bribe should not and must not come to my mind while you think in this way that reflects the idea that you are not only a person or an officer having honesty at the same time you are an officer having high sense of integrity. I think with this much example you might have developed a crystal clear idea related to the distinction between honesty and integrity. तबे पिला माने पुण थरे कहि दोची whether it is honesty or it is integrity both of them are virtues. Honesty and integrity are virtues of human society. They are virtues. Virtues means desirable values. Virtues means desirable values. Desirable values. Desirable values are called virtues. But integrity is a higher order virtue than honesty. Honesty is a virtue.
integrity is also a virtue, but integrity is a higher order virtue than honesty. विभिन्न स्पीयर रे ऑनेस्टी अच्छी, विभिन्न स्पीयर रे इंटीग्रिटी अच्छी. देख कॉर्पोरेट जिते पढ़ेबी तुमको कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ेबी से कहबी ये करी स्लाइड रे अच्छी, यू कैन चेक इट. देख कौन है कोका कोला कंपनी आउ पेप्सी कंपनी दीटाक कंपनी कौन कर कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग करचंती. बोथ ऑफ देम आर कंपिटिटर, both of them are competitor, but once things so happened that the secrecy of Coca-Cola was leaked out. Once things so happened that the secrecy of Coca-Cola company was leaked out. माने कोकाकोला केमिति तैयारी होची तार सिक्रेसी कौन ए जिनसटा लीक हो गला मार्केट रे. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज पेप्सी कंपनी व्हिच इन्फॉर्म द कोकाकोला कंपनी रिगार्डिंग द लीकेज ऑफ सीक्रेट इनफॉरमेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कोकाकोला. देख कंपटीशन भी होची एते बड़ बड़ दीटा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन किंतु तांका भितरे देख कौन अच्छी कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी अच्छी. कारण पेप्सी भाया कंपनी कोकाकोला कंपनी के जनई देला जे तुमर एटा लीक आउट हो जाइछ. दैट मीन्स इन इरा ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म big corporations are also expected to compete with each other by following certain norms, following certain ethics. Corporate ethics बड़े डिटेल डिस्कशन करी ए विषय. तेनो आज जेहेतु ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कथा कहूली, the way I explained you regarding the distinction between honesty and integrity, I think you might have understood it properly. Right now come to types of integrity. कौन कौन सब इंटीग्रिटी टाइप कौन से विषय में हमें बर्तमान डिस्कशन करिबा. टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कौन सब इंटीग्रिटी तीन प्रकार अच्छी. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी आई वुड बी डिस्कसिंग. जस्ट कम टू दिस थ्री टाइप्स. पिला माने देख फास्ट इंटीग्रिटर ना हला इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. फास्ट इंटीग्रिटर ना हला इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. सेकेंड इंटीग्रिटर ना हला मोरल इंटीग्रिटी. थर्ड इंटीग्रिटर ना हला प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी. तमरा क्वेश्चन पड़ी पारे व्हाट इज ऑनेस्टी, हाउ ऑनेस्टी इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, एमतिया क्वेश्चन पड़ी पारे. देख फास्ट इंटीग्रिटर ना हला इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. कौन इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी? राइट इट डाउन. अप्लाइंग आवर क्रिटिकल कॉन्शसनेस. राइट इट डाउन. अप्लाइंग आवर क्रिटिकल कॉन्शसनेस. अप्लाइंग आवर क्रिटिकल कॉन्शसनेस फॉर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ. फॉर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ social practice. Repeating it again. Applying our critical consciousness for accepting or rejecting the social practice is called intellectual integrity. पिला माने बुझे दउची एग्जांपल देकी. देख इंटेलेक्चुअल, our mind is the storehouse of all sorts of intellect. Our mind is the storehouse of all sorts of intellect. बुद्धिटा आम मन भितर थाए. So mind is the repository or storehouse or fountain of the intellectual ability. सोसाइटी रे बहुत प्रैक्टिस अच्छी. से प्रैक्टिस टाको एक्सेप्ट करिवा पूर्व आगे क्रिटिकल कॉन्शसनेस टाको अप्लाई करिवा. देख बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज राजा राममोहन राय. तमें जानिच राजा राममोहन राय आम देश रे सती प्रथा को विलोप करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखरे डिमांड करथिले. एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश अथॉरिटी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ राजा राममोहन राय. बिकॉज ऑफ इट द सती सिस्टम वाज अबोलिश्ड. देख गोटे समय कौन होथला
the women of higher caste, after the death of their husband, were expected to jump into the funeral pyres of their dead husband. स्वामी मरीगला परे स्त्री लोक माने हाई कास्ट हिंदू भितर स्वामीर चिताभस्म निजक कौन पोड़ी मारिबार प्रथाटा को कहला सती प्रथा। राजा राममोहन राय कहले हजबैंड वाइफ भितर कहीं जड़े आगे मरी पारे, जदि हजबैंड आगे मरीगला ताहले वाइफ जंप करियो फ्यूनरल पायर ऑफ द हजबैंड। इफ द रिवर्स हैपेन, सपोज द वाइफ डाइड फर्स्ट, व्हाई नॉट द हजबैंड? So Raja Rammohan Rai started thinking this is wrong. केमिति से कहले wrong? By applying his critical consciousness. So I am telling you the fact. Applying the critical consciousness of yours in matter of accepting or rejecting a social practice is called intellectual integrity. तार कारण टा बैकग्राउंड टा कही दउची कोन होची एक्चुअली बहुत गुडे जगह रे जोटी स्वामी मरी जाउथला स्त्री लोक मान को जबरदस्ती नियारे पकई दिया होथला। एंड द आयरनी, द प्रेडिकामेंट, द सफरिंग ऑफ द स्टोरी इज दैट आफ्टर डेथ ऑफ द हजबैंड कौन होतला वाइफ टा को अफीम खुआई दिया होथला, ओपियम। अफीम खाईदेले ऑब्वियसली ड्रग एडिक्ट एमती बिहेव करे, that woman was behaving like this। तापरे ताकू स्वामीर चिता से जो जोई उपरे बसई दिया होतला, सुआई दिया होतला, ताकू रसी रे बांधी दिया होतला। बांधी देकी ता चारिकड़े ता निज लोक माने सब घेरिकी रहुथिले, निया लगे दउथिले। निया लगे देला परे जेतले निया जळिबो, निया रे लोकटा पोड़ी हबो, तार अफीम निशा कमी जिवो, से छटपिट हबो, से चेष्टा करिवो केमिति जुईरू डेईकी पळी आसिया पई। से तले जुईरू डेईकी पळी आसिया पई चेष्टा करूथिला, सेतबळे तार निज लोक, तार ब्लड रिलेटिव, तार बापा, तार भाई, तार स्वामी घर लोक एमाने कोन करतले चारिकड़े ठेंगा धरिकी ठिया होथले। द मोमेंट शी वाज ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द फ्यूनरल पायर्स, दे वर बीटिंग हर सिवियरली एंड इन दिस वे शी वाज लाइंग अनकॉन्शियस एंड शी वाज बर्न्ड टू डेथ। दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमन। दिस इज a crime equal to with murder. That's the reason Raja Rammohan Rai applied his sense of critical consciousness and rejected this social practice. This is called intellectual integrity. I think all of you are clear. Second type of integrity is moral integrity. Second type of integrity is moral integrity. मोराल इंटीग्रिटी कहले कौन आमे बुझंती पिला माने? इन द लास्ट क्लास आई मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स। माने अछि मो कही थिली मोरालिटी रेफर्स टू द शुड बी, द ऑट टू बी एस्पेक्ट ऑफ थॉट एंड एक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। व्यक्तिगत स्तर रे मनीषटे भाबुछि कौन मु करिबा उचित, कौन मु न करिबा उचित, सेटा होची मोरालिटी बा नैतिकतार जिनस। सो मोरालिटी कन्स्टिट्यूट्स द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, थिंकिंग व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। जेतबेले मनीषटी व्यक्तिगत स्तर रे ये सब कथा चिंता करूची, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। देख, मोराल इंटीग्रिटी मीन्स स्टिकिंग टू your thought, your action, your behavior and your belief and to your speech across time and across situation। देख, गांधी जी सत्याग्रह रे विश्वास करथिले। You know that non-cooperation movement was organized by Gandhiji. Gandhiji gave a call for organizing non-cooperation movement in 1920 1920 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधीजी करथिले। बट इन 1922 गांधीजी ऑब्जर्व द फैक्ट दैट इन चौरी चौरा ए प्लेस इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, some people abdicated the path of non violence, अहिंसार मार्ग छाड़ी देले। दे resorted to violence, they set fire in a police station in which
22 policemen were burnt alive. जीवंत 22 जन पुलिस चोरी चरा इंसिडेंट रे जली जाइथिले. ईयर थिला 22 मसिया 1922 मसिया. नंबर ऑफ पुलिसमेन बर्नट अलाइव वाज आल्सो 22. वर्तमान गांधी जी तंकर सेंस ऑफ मोरालिटी अप्लाई कले. दिस इज रॉन्ग. पर्सनली आई थिंक इट इज रॉन्ग. सो दिस इज द राइट टाइम टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, कैंसल द मूवमेंट. बहुत लोग गांधी की ए मैटर रे क्रिटिसाइज करचंती, किंतु मु कहूची दिस इज intellect, this is your moral integrity. Gandhiji at the level of his morality started thinking this should not happen, this must not happen. That's the reason Gandhiji thought it was right to cancel the movement. This is clear. Next example of integrity is professional integrity. पिला माने कौनसी प्रोफेशन रे जेतले ऑनेस्टी ऑफ हायर डिग्री इज अडॉप्टेड बाय द पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. व्हाट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी? आई एम टेलिंग यू, व्हाइल ए प्रोफेशन होल्डर, यू कैन राइट इट डाउन, व्हाइल ए प्रोफेशन होल्डर इज applying honesty of higher degree in every situation and every time with respect to his duty in profession, then we say the person is having professional integrity. I am repeating it again. Professional integrity is the quality of adopting honesty of higher degree related to your profession across time and situation. Across time and situation. Across time and situation. केमिति पिला माने कहि दउछि, कसब केस जानी थिबो, कसब को फांसी दिया हला. कसब was accused in case of killing so many people in India. ट्रायल स्टेज पहुँचला. कसब लगी जड़े वकिल आसिकी ताको डिफेंड करिया पे चेष्टा कले, जो वकिल को सारा देश रे बहुत लोक गाली देइचंती. हाँ ना नहीं? लोक माने कहिले ए लोकटा अनएथिकल लोक, इमोराल लोक, पैसा लोभी लोक, पैसा लगी गोटा विदेशी टेरोरिस्ट जे कि आम देशर एते लोक को मारदेला मुंबई रे, ता लगी से लड़ुची. किंतु पिला माने देख, गोटे कथा होची, लीगल प्रोफेशन गोटे अच्छी, एडवोकेसी प्रोफेशन अच्छी. एडवोकेसी प्रोफेशन कहे whoever is your client, whoever is your client, you are expected to try to give relief to him. तम पाखक जी क्लाएंट आसुची, तमें ताको रिलीफ देवा पई चेष्टा करिवा दरकार. जा आईन रे जहा अच्छी से जिनस करिया दरकार. आईन रे कोन नाही, रेपिस्ट लगी वकिल लड़िबो, मर्डरर टेरोरिस्ट लगी वकिल लड़िबो, आईन सिद्ध कार्य नुहे कि. तेणु से लोकटा जे एडवोकेट जी कसब लगी लड़िले, सी ताको प्रोफेशनल इंटीग्रिटी देखैले. सी हुए तो फीज न नहीं थिबे, सी हुए तो फीज नहीं कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देबे, किंतु प्रोफेशन प्रति से ट्रुथफुल रहिबे. हायर डिग्री ऑफ ट्रुथफुलनेस इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले टू हिज प्रोफेशन. अनदर एग्जांपल मो कहूची, सपोज देयर इज ए डॉक्टर वर्किंग इन समवेयर इन इंडिया. इंडिया भितर से काम करूचंती डॉक्टर. व्यक्तिगत स्तर रे सी आबर्सन ने विश्वास करंतिनी. से भावंती आबर्सन इज ए सिनफुल एक्टिविटी. आबर्सन मीन्स किलिंग एन अनबॉर्न चाइल्ड. व्यक्तिगत भाव से विश्वास करती या, किंतु सी डाक्तरी प्रोफेशन रे अछंती. एंड यू नो इन इंडिया abortion is legal. So somebody who is pregnant came to him and he conducted surgery for the purpose of aborting that unwanted child. तेनो से प्रोफेशन प्रति 100% लॉयल्टी देखौचंती. इन थॉट he is displaying loyalty, in action he is displaying loyalty, in belief he is displaying loyalty, in speech he is displaying loyalty. We can say that person is a person of professional integrity. So all of you got the clear-cut distinction between these three concepts, that is intellectual integrity, moral integrity and professional integrity. Okay, got it?
Then come to the question that I gave you at the beginning, why our civil servants are expected to have honesty as well as integrity. How honesty and integrity would contribute for good governance. Eta gote question. Au gote question hala, honesty is necessary but not sufficient condition for good governance. Pilamane, honesty is necessary but not sufficient condition for good governance. Mu aguku padheibi what is good governance. Good governance means citizen centric governance, redressing the grievances of citizens effectively and quickly, and building the trust of the public in government and administration. This सब जिनस आगु पढ़ेबी पिला माने why our civil servants are expected to have honesty and integrity. First of all, you have to write honesty and integrity are the values of higher degree. Really, they are the virtues, they are desirable values. Our civil servants are expected to become to have honesty and integrity because point number 1, honesty and integrity would contribute towards increasing the trust of the public in government and administration. Point number 2, our civil servants are the administrative leader of our country, not political leader. They are the administrative leader of our country. As they are the administrative leader, who is a leader? Leader is a person who instills a sense of confidence among his followers. Leader कहले आमे सही बेला व्यक्ति की बुझंती जिए कि तार फॉलोअर का मनरे आत्मविश्वास भरी दिए. So if our civil servants are having honesty and integrity, the confidence level of public would be increased, and public would not be forced to give bribe to the different department for the purpose of getting their work done. In this way, would get a corruption-free system, a corruption-free governance, a corruption-free administration, in which confidence of the people would be higher. And if our country is becoming corruption-free, obviously it would contribute towards good governance. Corruption-free government itself is a good governance. Corruption-free governance itself is a good governance. Pilamane buझी parucha? Why our civil servants are expected to have a high sense of honesty and integrity, and in which way it would contribute towards good governance. तापरे second question क्या आसा मु detail आगु को dictation देबी जितबळे offline class हबो. first offline class वाणिक तरफ रु हबो कटक रे, तापरे offline class ethics रे हबो भुवनेश्वर रे. जितबळे हबो detail मु exhaustive dictation देबी. second question टाको shortcut रे कहि दउची that honesty is necessary but not sufficient condition for good administration. तुमको आगे लिखिया पई पड़ियो. point number 1, what is honesty? point number 2, what is integrity? point number 3, what is good governance? good governance आगु को पढ़ेबी in detail. लिखि सारला परे आमे क्वेश्चन टाको आंसर दे दबा. देखो, honesty means being truthful, fair and obedient to the law of the organization is called honest, and honesty, and the person is called honest. So honesty is required on part of civil servant. But if civil servants are honest only in their action, while they are honest related to the rules of the organization, there is no guarantee that the administration would become corruption free and citizens grievances should be redressed properly and effectively. So along with honesty, integrity is required. कारण integrity ता higher degree of honesty. सबु situation रे honest हबा, सबु समय रे honest हबा. While our officers are having integrity, that will eventually contribute towards good governance. Therefore, honesty is necessary, but not sufficient factor. It is insufficient factor for good governance. Really, we need integrity, because while public trust in governance would be increased
then our country would become corruption free, and while country would become corruption free, India would free from parallel economy and black money, and while India would become free from corruption, black money and parallel economy, eventually it would contribute towards increasing the GDP, gross domestic product of the nation. Therefore, honesty is necessary but not sufficient factor for good governance. Aji jehetu time au nahi, because I lack time, so I cannot teach anything more for today. Next class re mo detail padhaibi jo guda kahuthili quotation based question aji discussion kari parleni, and again I am making a declaration on behalf of VANIKIAS that we would be starting our offline class from 1st June in Cuttack branch, then subsequently in Bhubaneswar branch ethics class will be started.